Hello students. This lecture series which I'll be making is for NEET UG students and also for the students who are studying in 11th and 12th standard. So I'm starting with Unit 3 Cell Structure and Function, Part 1 Cell, the Unit of Life. I can assure you that this series will be very beneficial to you. First we will complete one unit and then we'll start with the next one. So in this lecture, I'll be mainly dealing with the outline of this chapter, the types of organisms, the types of cells, and some features of the prokaryotes. And in next, we'll learn about eukaryotes and the organelles. So two types of organisms are there, unicellular and multicellular. I hope everyone know that cell is the basic unit of life which forms tissues. Tissues give rise to organ give rise to organ system, and finally an organism is made. So two types of organisms, unicellular and multicellular. The examples of unicellular is bacteria, amoeba, plasmodium, yeast. This is very important example. I am giving emphasis on the examples. Please do learn examples and please do keep in mind. Okay. Now, the differences of unicellular and multicellular organism. First, unicellular organism we'll be discussing. So the transport is simple diffusion. So simple diffusion means from higher concentration to lower concentration. Now, as it is a single cell, all the cellular processes is taking place in a single cell, means all the processes which are required for an organism to be alive is taking place in one cell. The cell is exposed to the environment. That means that therefore the transport is simple now, because whole cell body is exposed, so there is no need of special mechanism. It is easy for the exchange of materials through the outside environment. Now, asexual reproduction and sexual reproduction both are seen. Lifespan is comparatively shorter. When we talk about multicellular organism, it is composed of numerous cells. Transport by simple diffusion, passive transport, active transport. So here we have more than one mechanism of transport. Why? Because here we also require cell to cell transport, and here active transport means the transport which requires energy is also important. I'll make a separate video for the types of transport. Okay. Now, cellular processes are taking place in different specialized cell, which are differentiated in a way to perform that particular function. Okay. Cell present in outer region are specialized to combat exposure to the environment. The reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction, here the formation of gametes takes place. Lifespan is comparatively shorter. Now, how did the word cell came into existence? Now, it was by Robert Hooke. So, Robert Hooke was the first one to observe cork cell, that is dead cell, uh, in his microscope, and when he saw, he to him these cell appeared like a cells or rooms, okay, like in a monastery. So he coined the term cell, and we are using this terminology till date. Now, who observed the first living cell? Anton von Leeuwenhoek. So he was the first one who used a simple microscope, single lens microscope, to observe the first live cell. Now, cell theory. Cell theory is very important. The Sheldon and Schwann together formulated it, and some modification were done by Rudolf Virchow. So, what did Rudolf Virchow give? He gave the principle omnicellula ecellula. That is how the new cell is arising. It is arising from pre-existing cells. So, the final cell theory which we know now is all living organisms are composed of cells and products of cell, and all cell arise from pre-existing cell. Now, the types of cell, there is prokaryotic cell and eukaryotic cell. The difference in sizes, you can see the eukaryotic cell is much bigger than the bacteria and pplo, which are prokaryotic. Virus don't belong to any of this category because it is a acellular organism. Now, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now, prokaryotic cell, the size is smaller, it lacks the nucleus. Okay, as the name suggests, prokaryotic means
primitive nucleus. Okay, so here the nucleus is known as nucleoid because there is no well defined nucleus. In eukaryotic cell the nucleus is well defined with nuclear membrane. In prokaryote we are lacking the membrane bound organelles. In eukaryotic organism membrane bound organelles are present. The type of cell division by which prokaryotic cell divides is mitosis. In eukaryote we find both mitosis and meiosis. Chromosome number, only single circular chromosome in case of prokaryote. In eukaryote there is one, more than one set of chromosome. Growth faster in prokaryote. In eukaryote the growth is little slower. Ribosome, which is a non-membrane bound organelle, it is 70s in prokaryote. In eukaryote it is 80s. DNA replication, in prokaryote the DNA replication at once only the whole genome is replicated. In eukaryote there is a selective and regulated replication, only some origins are activated at a time. Plasma membrane, it is important to note that it is present in both, and examples you can learn. Now, it is important that what is plasmid? I have mentioned the word plasmid. Plasmid is an extra chromosomal DNA which provides, it is not important for living, but it adds an additional property for living. Like antibiotic resistant property. F plasmids have a fertility plus point. So I'll discuss about the different types of plasmid, when and where I'll feel it is important. We'll discuss some questions also, if any in the previous year NEET UG. I'll see the papers, and if it is required I'll discuss, otherwise I'll not, because your syllabus already is very huge. Now, properties of cell. Cell differ greatly in size, shape and activities. The sizes of cells, even in different unicellular cells have different sizes. Also the difference in same organism, the shapes of cells are different, multicellular organism. So for example, if we talk about size, mycoplasm is a smallest cell. Bacteria, which is having the size of 3 to 5 micrometer, the sizes also are important. Okay, the difference of sizes between eukaryotic cell, mycoplasm, bacteria, smallest cell, largest cell, you need to learn these things. Okay, the shape also vary in the multicellular organism. Like we are having red blood cell, we are having nerve cells, we are having different shapes. Like red blood cell is biconcave. Why it is biconcave? It is biconcave because it needs to flexibly pass into the capillaries, in veins, in arteries, into pass. Now it is mobile cell, so it need to always go and go. So that shape is facilitating its movement from thin diameter of capillaries, etc. So this you need to understand, that shape of cell also varies. Now cell envelope of bacteria is having a three layers, that is glycocalyx, cell wall, plasma membrane, which is having different function. Glycocalyx which is of different thickness among different bacteria, it is known as slime layer or capsule. If it is a like loose sheath, it is known as slime layer. If it is tough and thick, it is known as capsule. Cell wall provides protection. Plasma membrane, which is present in both eukaryotes and prokaryotes. Here we are talking about prokaryotes. So here plasma membrane is semi-permeable, interacts with the outside world. In case of flagella, you need to remember, mesosome. What do you mean by mesosome? Mesosome is a structure which is unique to prokaryotes, and it is very important. It is a protrusion into the cell. As you can see in the diagram, you can see some more diagrams to make the picture more clear. But you can see in this diagram also there is a protrusion inside the cell, and this is very important. It performs a role in respiration, in cell wall formation, in distribution of daughter cell, etc. So it is having many role in also secretions also. So you need to remember that mesosome, and there are lots of questions coming from mesosome. Okay, so you should know that it is unique to prokaryotes. There are two types of bacteria, gram positive bacteria and gram negative bacteria. So we perform gram staining in lab. What do? We take a slide, we put a bacteria, we stain it with crystal violet, which is a primary stain. We keep it for some time and wash with alcohol. So if the bacteria is gram positive, it will retain the stain. Even when you wash with alcohol, it will not get washed, it will remain. So when you stain it with the another counter stain with saffron in, वो लेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेन ना, दो स्टेन बैक्टीरिया नहीं ले सकता एक टाइम पे. बट अगर आप ग्राम नेगेटिव को देखोगे तो क्रिस्टल वॉयलेट के साथ आप उसको रख दो, वो नहीं ले पाएगा.
तो क्या होगा, जब आप अल्कोहल डालोगे वो वॉश अवे हो जाएगा और काउंटर स्टेन ले लेगा। तो क्रिस्टल वॉयलेट से जो स्टेन हो जाते हैं डीकलराइज नहीं होंगे, और डीकलराइज नहीं होंगे तो वो सैफरन ले लेंगे, तो मतलब वो पर्पल रहेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन लेंगे। और जो काउंटर स्टेन ले रहे हैं, जो सैफरन ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो डीकलराइज हो जा रहे हैं। जब हम अल्कोहल से उसको वॉश कर रहे हैं बैक्टीरिया को, तो वो क्या होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो ये डायग्राम है ग्राम नेगेटिव। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की थिकनेस और ऑल्सो आउटर मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव में एलपीएस होता है, अभी हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर बाहर होता है जो एक एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है। तो जो सिम्टम्स होते हैं ना, जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से, तो दो डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं जो डिफरेंट सिम्टम्स हमें देते हैं ना। इम्यून रिस्पॉन्स डिफरेंट टॉक्सिन्स के लिए डिफरेंट होता है। ये इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट यू शुड नो दैट ग्राम नेगेटिव में एलपीएस आउटर लेयर होता है, उसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है ग्राम नेगेटिव का वो डिफरेंट होता है, वो एंडोटॉक्सिन है। ग्राम पॉजिटिव एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। नाउ दिस इज अ पिक्चर, दिस इज योर टास्क। इसमें से ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, ग्राम नेगेटिव कौन सा है, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। डिफरेंट शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, डिफरेंट शेप्स। कोकाई होता है, बेसिलस होता है रॉड शेप, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरिला, स्पाइरिलम, स्पाइरोकीट्स। सो ये शेप्स आपको दिमाग में रखने हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला मोबिलिटी के लिए यूज होता है बाय प्रोकैरियोट्स। तो ये अगर बैक्टीरिया के पास वन फ्लैजिलम हो और सेवरल, एंड दे में बी आइदर पोलर, पोलर मतलब वन और सेल्यूलर फ्लैजिला, मेनी फ्लैजिला एक ही पॉइंट पे, है ना, या फिर पेरिट्रिकस है, सेवरल फ्लैजिला ऑल ओवर द बैक्टीरियम। सो दो चीजें हो सकती है, या फिर एक ही फ्लैजिला हो सकता है एक स्पॉट पे, और पेरिट्रिकस हो सकता है सेवरल फ्लैजिला ऑल ओवर द बैक्टीरियम। तो अगर एक स्पॉट पे एक साथ हो रहा है तो वो अलग चीज बोलते हैं, पेरिट्रिकस मतलब आपके ऑल ओवर द बैक्टीरिया फ्लैजिलम है। इन एडिशन टू मोटिलिटी, फ्लैजिला possess several other functions that differ between bacteria, and during the bacterial life cycle a flagellum can for example participate in, so flagella का सिर्फ मोटिलिटी नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन फ्लैजिला परफॉर्म कर सकता है, एडहेशन भी परफॉर्म। आगे हम देखेंगे कि मेन जो एडहेशन का काम होता है वो फिम्रे का होता है, ठीक है, तो वो चीज अलग हो जाती है, लेकिन फ्लैजिला भी इसमें यूज हो सकता है। द बैक्टीरियम फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, जिसमें फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। बेसल बॉडी जो होता है वो एक रोटेटरी मॉलिक्यूलर मोटर की तरह काम करता है, जो रोटेट होने के लिए और प्रोपेल होने के लिए हेल्प करता है बैक्टीरिया को। देयर आर टू प्रोटीन्स, MOTA एंड MOTB प्रोटीन्स, जो स्टेटर फॉर्म करते हैं फ्लैजिलर मोटर का, और यहाँ पर होता है टॉर्क। टॉर्क से जो होता है रोटेशन होता है, टॉर्क का जनरेशन होता है, उससे फ्लैजिलम का रोटेशन होता है। और जो ये रोटेशन की एनर्जी है वो कहाँ से आती है? प्रोटॉन जब लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे ये रोटेशन के लिए एनर्जी आती है। सो दिस ऑल्सो आई हैव थोड़े लिस्ट किए हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये आप याद रख लोगे तो अच्छी बात है। व्हेन यू विल डिस्कस क्वेश्चन ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा कि आपको कितना पढ़ना है। पिलाई एंड फिमराई आर समथिंग विच आर नॉट यूज फॉर मोटिलिटी। द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि ये भी मोटिलिटी के लिए होते हैं। नो, ये फिमरी होते हैं जो एडेरेंस के लिए यूज होता है। पिलाई एक एक्सटेंशन है प्रोटीन का, है ना, एक स्पेशल प्रोटीन है जो एक तरीके से एक्सटेंशन की तरह बाहर आता है। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेनस है, तो इसीलिए वो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। वी नो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होता है 70S राइबोसोम, और पॉलीसोम फॉर्म होते हैं ऑन द mRNA जीन। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बहुत सारे राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। ये डायग्राम आपको जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए ये याद रखो कि पॉलीसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है कि जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट सेल, वो साइटोप्लाज्म में स्टोर रहता है। कोई भी चीज हो सकती है, आइदर इट कैन पिगमेंट्स आल्सो, इट कैन बी एनीथिंग व्हिच इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो आप बहुत सारे डायग्राम्स में भी देखोगे कि साइटोप्लाज्म में आपको इंक्लूजन बॉडीज दिखते हैं, तो वो क्या है, एक रिजर्व है, ठीक है, मटेरियल्स का रिजर्व है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में है। वो कुछ भी हो सकता है, वो फूड मटेरियल भी हो सकता है, वो वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, वो गैस वैक्यूल्स भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास जो भी डाउट्स है आप वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा प्रोकैरियोट्स के एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे प्लाज्मिड अगर मुझे जरूरत लगी वो भी मैं ऐड कर दूंगी, और हम
क्वेश्चंस करेंगे थर्ड क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे एंड थर्ड क्लास में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो नीट यूजी पेपर में बहुत कॉमनली आए हैं। और आप अपने साइड से भी प्लीज प्रैक्टिस हमेशा रखिए। ओके, कंटिन्यू।